Protests against Kejriwal before his visit to Ghazipur landfill site. Protests, in fact, have broken out from both the BJP and the Aam Aadmi Party quarters. You can see BJP and AAP workers over there in those pictures clashing at the Ghazipur site at the moment. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is expected to arrive at the Ghazipur landfill site in a short while from now. He, in fact, had tweeted about his visit yesterday and said that he has heard from those within the BJP that there are garbage mountains in the national capital. Let's listen in to Amit Bhardwaj speaking to Dilip Pandey. With Dilip Pandey over there of the Aam Aadmi Party, who in fact puts the blame squarely on the BJP for the garbage mountains that have emerged in the national capital, have only been growing over the years. Rahul Gautam, my colleague, is also joining me live from the Ghazipur landfill site. Rahul, BJP and Aam Aadmi Party workers, they're clashing at the landfill site ahead of Arvind Kejriwal's visit. This is just a small teaser of what could possibly be upcoming ahead of those MCD elections. Absolutely unfortunate. Absolutely, follow me. Mr. Arvind Kejriwal has sounded the poll bugle as far as MCD polls are concerned with the decision of visiting Ghazipur landfill site. And I'm at the site only. You can see these are the workers of both Aam Aadmi Party and BJP, who are obviously, chanting slogans against and for pro Aam Aadmi Party slogans. And in fact, the police is having a very difficult time, trying to pacify these supporters, trying to contain this flash protest that has been organized by Aam Aadmi Party and BJP. In fact, obviously, you can see there's an absolutely chaotic situation here. And आप क्यों आए हैं यहाँ पे? आज केजरीवाल का विरोध हम करने आए हैं, जो कूड़े का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली नगर निगम और सांसद गौतम गंभीर के प्रयास से जो कम हो गया। 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठ गया है, 20 मशीनें काम करनी शुरू कर दी। आज ये क्रेडिट खोर, ये शराब माफिया केजरीवाल आज उसका श्रेय लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वो तो आपका आरोप लगा रहे हैं कि आपने जगह जगह पर पहाड़ बना दिए कूड़े के। कहाँ थे केजरीवाल 8 साल तक? कहाँ थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए कहाँ थे दिल्ली में? आज जब काम होना शुरू हो गया, 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठ गया, काम शुरू हो गया, और जैसे जैसे कूड़ा कम होता जाएगा वैसे वैसे मशीनें बढ़ती जाएंगी। 20 मशीनें आज कूड़ा कम करने का काम कर रही हैं। आज जब काम शुरू हो गया, आज वो श्रेय लेने के लिए आ गए। क्रेडिट खोर केजरीवाल को हम यहाँ नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। So obviously, the message is very clear that these supporters are saying that they won't allow Mr. Arvind Kejriwal to visit this landfill site, as he is coming only to politicize this issue, which is affecting many lakhs of people. You can see these placards here, Kejriwal Sharm Karo, and there are in fact Aam Aadmi Party supporters also here. आप बताइए, आपके नेता को आने के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, बीजेपी वाले। क्यों नहीं आने देंगे? ये देश का लोकतंत्र है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ सकता, चारों तरफ आपने कूड़े ढेर लगा दिए, अब कूड़े ढेर को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री कौन आएगा? ये भाजपा की तानाशाही है, जो हमेशा ये चीज करती रहती है। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको आने से रोक रही है। ये गुंडागर्दी बोलते रहे भाजपा की है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 8 साल से आप कहाँ पर थे, आपने कुछ काम क्यों नहीं किया? लगातार काम है, लगातार हमारा मुद्दा यही रहा है, कूड़े का ढेर हटाना है और दिल्ली को चमकाना है।
you can see again chanting slogans. These are Aam Aadmi Party supporters chanting slogans against BJP, saying that BJP has absolutely failed as far as governance is concerned, as far as MCD is concerned, and these garbage mountains, that are visible everywhere in the national capital, particularly in outer Delhi, is all because of inefficiency of BJP. So you can expect that this issue and this visit is certainly going to be a big political drama, because Mr. Kejriwal and Aam Aadmi Party, they have sounded all legal for MCD elections.